Hello class. In last lecture we are taken here Laplace transform of here derivative. We will take one more example so this concept is more clear to you. I take one example. Find the Laplace transform of following differential equation y double dash 4y is equals to sin 3t y of 0 इज इक्वल्स टू वाई डैश. यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे हमें क्लियरली दिया है कि वाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 0. सो जस्ट वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y double dash plus 4y is equals to sin 3t. ये हमें क्या है गिवन है. सो व्हाट वी डू ऑपरेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड. यहाँ पे देखो हर वक्त आपको इतना सिंप्लीफाई करके नहीं दिया रहेगा. इतना सिंप्लीफाइड है वेरी गुड. अदरवाइज दे गिव्स अस अवर दिस एग्जांपल इन दिस डेरिवेटिव फॉर्म राइट ना. जो हमने अभी लिया ना ये ऐसे फॉर्म में आपको क्या करते हैं दिया रहता है. सो यू जस्ट रिड्यूस दिस इन दिस फॉर्मेट. अदरवाइज आप क्या करोगे उससे एज इट इज़ भी सॉल्व किया तो भी. पर याद रखना है कि सबका मीनिंग क्या है कि डबल डेरिवेटिव है. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये फॉर्मूला. थर्ड ऑर्डर का आपको नहीं पूछा जाता. सो आगे का नहीं भी किया तो भी चलेगा. सो लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ साइन 3t. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लाप्लास में यहाँ पे सेपरेट करती हूँ. लाप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव एंड 4 टाइम लाप्लास ऑफ y इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ साइन 3t. अभी हमें पता है कि डबल डेरिवेटिव का लाप्लास क्या आ जाता है आपका एस स्क्वायर y ऑफ s माइनस एस ऑफ y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0 प्लस 4 टाइम ys इज इक्वल्स टू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9. ओके ये क्या है आपका ये फंक्शन है जो अपने ओनली लैप्लास ऑफ y लिखा है ना. यहाँ पे आपको चाहिए तो लिखो कि लैप्लास ऑफ y ऑफ t is equals to y of s. That's why we write here y of s. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका s square. I just separate it as I know y of 0 and value of y of here y dash 0. Substitute here. So s square of y of 0 minus 0 plus 4 times y of s is equals to 3 upon s square plus 9. So what I get here s square, I just take here outside the y of s, I get y of s is equals to 3 upon s square plus 9. Here I convert whole equation in terms of what s. So here is s square plus 9 into s square plus 4. This is the Laplace transform of your
f of t means derived function. Okay, so this is the way to calculate here derivative of the here Laplace transform of differential equation. Now there is next chapter. Next chapter is inverse Laplace transform. So first we write down all the formulas. Inverse मतलब क्या रहता है, जैसे हम डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन लेते हैं ना, इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, सभी फॉर्मूला उल्टा हो जाते हैं. सेम थिंग हैपन इन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, आपको अगर लैप्लास के सभी फॉर्मूला याद हैं तो आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी easily find out कर सकते हैं. First I write down all the formulas in here inverse Laplace transform and then we go further. So next chapter inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform. Okay, so what is the inverse Laplace transform here? फर्स्ट Laplace ट्रांसफॉर्म के मैं सभी फॉर्मूला एक बार रिवाइज करती हूँ. यहाँ पे फॉर्मूलाज क्या है आपके Laplace ट्रांसफॉर्म के. यहाँ पे देखो कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या आता है, 1/s. व्हाट इज Laplace इनवर्स का क्या हो जाएगा, इनवर्स को हम क्या करेंगे, इनवर्स Laplace ऑफ 1/s इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इज 1/s माइनस a. जैसे हम इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव में लेते हैं ना, उसी प्रकार आपको अगर Laplace के फॉर्मूला पता है ना, इनवर्स के अलग से बाहर करने की जरूरत नहीं है. Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at क्या है, s माइनस a. तो इनवर्स Laplace ऑफ 1/s माइनस a क्या आएगा आपका, e⁻at. Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at क्या आता है, a/s² प्लस a². सो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज 1/a sin at. Okay, so first we write down all this formula which will we used in this chapter and then we go further. Okay, so first formula here what is Laplace वन f of s अगर आपका 1/s रहा, f of s is equals to 1/s, then इनवर्स Laplace क्या आएगा उसका, 1 आएगा. ओके, इनवर्स Laplace ऑफ 1/s इज इक्वल टू 1 और Laplace ऑफ 1 इज 1/s. इनवर्स ऑफ 1/ Laplace इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस a रहा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻at. s प्लस a रहा तो क्या हो जाएगा, e⁻−at. 1/s प्लस a² रहा, 1 रहेगा, यहाँ पे ऊपर 1 है. अगर a रहता तो मैं क्या लिखती, sin at. अगर यहाँ पे a नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1/a sin at. s/a² माइनस a² का क्या आ जाता है, cos of at. 1/s² प्लस a² का 1/a साइन हाइपरबोलिक at. s/s² प्लस a² का cos हाइपरबोलिक यार at. नेक्स्ट यहाँ पे अगर यहाँ पे s/s² माइनस a² का ब्रैकेट स्क्वायर रहा तो देखो, फिर से एक बार देखो, s/s² माइनस a² का ब्रैकेट स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, t/s2a sin at. 1/s² प्लस a² ब्रैकेट स्क्वायर रहा तो क्या आ जाएगा आपका, 1/2a³ 1/2a³ sin at माइनस cos at. और यहाँ पे 1/sn प्लस 1 रहा तो क्या रहेगा, ये गामा का ये है, आपको ये गामा नहीं याद रखना ना, तो इसके बजाय आप ये भी याद रख सकते हो कि t⁻n/n फैक्टोरियल. ओके, t⁻n/n फैक्टोरियल. Okay, so
फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जैसे मैं अभी वो हम लेते हैं कि शिफ्टिंग थ्योरम्स वगैरह, यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि शिफ्टिंग थ्योरम सभी थ्योरम आपके रिवर्स हो जाते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में है ना, इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूला रिवर्स हो जाते हैं। सेम प्रोसेस इज हेयर, कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपके इंटीग्रेशन के यहाँ पे लैपलास के सभी फॉर्मूलाज यहाँ पे रिवर्स हो जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनवर्स के लिए देखो क्या है, हमने पहले ली थी कि एफ ऑफ टी के लिए आपकी नॉर्मल, यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है। देन लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस ए। ये हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किसके लिए है, लाप्लास के लिए है। इनवर्स में देखो क्या हो जाता है, और लाप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी इज इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। ये हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो इनवर्स में देखो क्या हो जाएगा, लिखते कैसे, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए। अगर यहाँ पे एस प्लस ए रहा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेस टू माइनस ए टी एफ ऑफ ए, और लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए रहा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी। ओके, ऐसे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। This is your first shifting property. Now what is the second shifting property? प्रोसीजर टू यूज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे कि फर्स्ट हाउ टू हियर यूज द सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर आपको गिवन रहेगा
function of s is equal to e raised to minus s g of s, ये गिवन है आपको। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, फर्स्ट रीड a from e raised to minus as, then coefficient of e raised to minus as g of s, and then L inverse of g of s is nothing but g of t। और फिर क्या करेंगे हम, इसमें मैं आगे यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, फोर्थ वन यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस t by t minus a, we get g of t minus a, and then L inverse of f of s is equals to g of t minus a, where t is greater than equals to a। Okay, so this is the way when we take actual exam, then this concept is more clear to you। Okay, यहाँ पे हमें क्या करना है, we want to solve this example by using this method। Now inverse function, inverse of Laplace inverse of here f of s is equals to f of t है, then what happen, then in here inverse of integration s to infinity f of s ds is equals to आपका f of t divided by t। ओके, जो हमने यहाँ पे लिया था ना, व्हेन वी डिवाइड बाय टी, देन व्हाट वी डू, वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन। व्हाइल देयर इज अ इंटीग्रेशन फंक्शन एस टू इन्फिनिटी, लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर टेकिंग हियर लाप्लास। सो इनवर्स ऑफ, इन लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन क्या आ जाएगा, ओनली डिवाइडेड बाय टी टू योर फंक्शन ऑफ टी। नाउ देयर इज वन नोट that L here we can write this property as f of s is equals to derivative of as square plus bs plus c divided by as square plus bs plus c। We can write this property in this format also। Now next one property is L inverse of f of s is equals to f of t, then L inverse of derivative of f of s is equals to minus t into f of t। Okay, now next one property is fifth one, that if Laplace transform, inverse Laplace transform of f of s is equals to f of t, then inverse Laplace transform of 1 upon s into f of s is equals to integration 0 to t f of t dt। Again remember this one also, while we integrate any function, हमने लिया था कि while we integrate any function from 0 to t, what I want to do, I just here what I do, I just here multiply by 1 upon s। Same here concept using inverse function, that
inverse of 1 upon s into f of s is equals to 0 to t f of t. So there are some formulas which we write down first. What is the f of s? L inverse of f of t. So first one, f of s minus a is equal to e raised to a t f of t. Then second one, e raised to minus as f of s, then which is equal nothing but f of t is equal to f of t minus a, and here 0 t greater than a, t less than a. Okay, fourth one, s into f of s, and here f dash t if f of 0 is equals to 0. Next, fifth one, minus 1 raised to n, nth derivative of f of s is nothing but t raised to n f of t. Okay, next sixth one formula is f of s upon s is nothing but integration 0 to t f of u into du. F of t minus u g of u du. Okay, all these are nothing here formulas for functions. Here Laplace transform. Okay, we already here note down all this formula here. ओके हमने जो अब तक जो प्रॉपर्टीज ली है ना उसमें हमने सभी फॉर्मूलाज लिए हैं. वी जस्ट रिवाइज ऑल दिस फॉर्मूला हियर. Okay, thank you.